ओके, द प्राइसिंग डिसीजन के अंदर क्या चीज आ जाती है? प्राइसिंग डिसीजन के अंदर आता है कि आपने सर्टेन चीजों को चेक करना है बिफोर सेटिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। क्या चीजें आपने सेट करनी है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्राइस कभी भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से नीचे नहीं होती, एटलीस्ट आपने जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी है वो कवर करनी है। सो प्राइस has to be according to the cost. That is important. Okay, so that's the first factor that you consider in setting the price. What is the cost of making the product, and then set a price above that. फिर कॉस्ट के अंदर आपको चेक करना होता है इसकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, इसकी फिक्स कॉस्ट कितनी है। ठीक है, दूसरी चीज जो आपने चेक करनी होती है वो ये कंपेरेटिव कंडीशंस क्या हैं। अगर आप मोनोपोलिस्ट हैं तो यू कैन सेट द प्राइस, लेकिन अगर आप मोनोपोलिस्ट नहीं हैं, आपका कंपटीशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू सेट द प्राइस। सो कंपैरेटिव कंडीशंस जो हैं दे विल डिटरमिन व्हाट प्राइस इज सेट। स्मॉलर फर्म्स यूजुअली हैव लेस लैटिट्यूड इन सेटिंग द प्राइस। जी जरा जोर से बोलें। मोनोपोलिस्ट वो बिजनेस होते हैं विच कंट्रोल द मेजॉरिटी ऑफ द मार्केट। दे उनका मार्केट शेयर बहुत हाई होता है, मेजर कस्टमर्स, नंबर ऑफ कस्टमर्स जो होते हैं उनको वही प्रोवाइड करते हैं प्रोडक्ट। जैसे कराची के अंदर के इलेक्ट्रिक है, इट्स अ मोनोपोली। whoever needs electricity will have to go to K Electric, they don't have a choice. Pakistan Railway is a monopoly. If you want to travel railway, you have to use Pakistan Railway. तो वहां पे कंपेरेटिव कंडीशंस उनके ऐसे हैं कि उनका कोई कंपेरेटर नहीं है, तो दे कैन सेट देयर ओन प्राइस। फिर कंपेरेटिव प्राइसेस एक्चुअली विल हैव टू बी टेकन इनटू consideration. There are certain markets in which there are some players or some businesses that are called the market leaders. Market leaders are those businesses which set their own price and everyone follows them. ठीक है, you will follow them if your product is not differentiated. You will keep the leader in mind, the market leader in mind, and then you are going to set the price. अब उससे ऊपर भी हो सकती है, उसके बराबर भी हो सकती है, उससे नीचे भी हो सकती है। Bottom line is you are keeping him as a benchmark before you are setting your own price. Then what is the marketing objective? Are you going to use mass marketing? Mass marketing requires a different pricing method, different pricing strategy. तो ये अब आपने इसको करना है। Another thing that you have to keep in mind, अच्छा अब देखो थोड़ा सा डिफरेंस आता है बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स में। Business studies says that you have some latitude in setting your own price. You can make a pricing decision. Economic theory says that pricing is normally done depending upon the structure of the market, the structure of the industry. It is done by the interaction of supply and demand. But one other factor which will determine whether you can set the price or what price will be set is price elasticity of demand. Price elasticity of demand means that how does the product respond, प्रोडक्ट किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है टू अ चेंज इन प्राइस। नाउ इफ द प्रोडक्ट इज वेरी सेंसिटिव टू प्राइस, ओके, आपने प्राइस को चेंज किया एंड कस्टमर बिकम्स वेरी सेंसिटिव, कस्टमर सेज दैट नो 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 नो, देयर इज नो वे दैट आई एम गोइंग टू पे यू सच अ हाई प्राइस। ओके, सो in this situation your latitude or your ability to set your own price decreases. तो ये एक फैक्टर है उसके अंदर। इलास्टिसिटी, व्हाट इज इलास्टिसिटी? इलास्टिसिटी मींस रिस्पांस, हाउ मच डज द मार्केट रिस्पॉन्ड। okay, now if the market is responding a lot, if the customer is responding a lot to an increase in price, so you do not have a lot of latitude there. Okay, and if the customer is responding less, then you have some latitude whereby you can increase or decrease the price. ठीक है जी। सो इसमें I would like you to watch a certain explanation, a certain video, वो ज़रा आप देख लीजिए, उसके बाद फिर हम इसको करते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या। दिस इज अबाउट वेयर वी विल स्टॉप
फॉर टुडे. कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे. जस्ट गिव मी अ मिनट, क्योंकि ये आपको सिखाने के लिए आई नीड अ वीडियो. विदाउट दैट आई कांट डू. जस्ट अ सेकंड. Okay, let's have a listen. जी. अभी भी नहीं आ रही. बहुत हल्की आ रही है, बहुत ज्यादा. Why is this? Okay, let me just tell you that for certain products, the price will be the price will be very sensitive. Okay, the product will be very sensitive to a change in price. Now, why does that happen? If let's say the product is a luxury, ठीक है, if let's say that the product is a luxury, तो उसमें necessity नहीं है वो. तो because it's not a necessity, the uh, if you increase the price, then the customer will simply switch to another product. He doesn't need the product. He's not desperate for the product. Likewise, if the product is habitual, अगर habitual product होगी तो customer will be forced to buy it under any circumstances. ठीक है. तो कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसमें कस्टमर जो है ना वो he will be forced to buy the product even if you increase the price. So if you think that your product is inelastic, which means customer will be forced to buy it even if you increase the price. Cigarette hai, for example. Cigarette is, I don't know why I'm giving the example of cigarette today, but cigarette is one thing which is addictive. Okay, it is like addictive. So even if you increase the price, the customer will be forced to purchase the cigarette because it is price inelastic. It does not respond to a change in price. ठीक है जी. So this is one thing. Another thing which will determine whether the you will set a high price or a low price is whether the product is new or old. If the product is new, ठीक है, you will use, sometimes you use what is called a skimming strategy. Skimming का मतलब ये होता है कि आप उसका जो है प्राइस इनिशियली बहुत हाई रखते हैं और उसके बाद उसकी प्राइस को आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस करना शुरू करते हैं. ठीक है. और पेनिट्रेशन के अंदर शुरू में आप जो है बहुत हाई प्राइस रखते हैं और उसके बाद बहुत लो प्राइस रखते हैं और उसके बाद जब आप पेनिट्रेट कर जाते हैं, पेनिट्रेट का यहाँ पे मतलब होता है यू get the market share. So when you get the market share, then you try to increase the price slowly. So this is the entire logic behind this the new product. So these are some of the factors which you will keep in mind when you are launching the product. Now broadly speaking, जैसा मैंने आपसे कहा, इकोनॉमिक थ्योरी ये कहती है कि prices are set where demand and supply intersect. Where demand and supply intersect. But business theory says that you can set the price. Broadly speaking, prices are, they fall in the following category: cost based pricing. Okay, cost based pricing. Then there is uh, competition based pricing. Then there is price discrimination. Then new product pricing. In that you can have market skimming or penetration pricing. Okay, so these are some of the pricing methods that you will use, and in order to make you understand this better, there is a video which you will watch. In that I have explained it through examples. This is not something that you can understand
without proper examples. So that video I will share with you, and you're going to watch it. And